join my digital lectures. Of course, I'm Farha Sufyan, your mathematics teacher. I warmly welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today, my topic is standard metric units of length. By the end of this lesson, you will be able to use standard metric units of length, that is kilometer, meter, and centimeter, including abbreviations. What is length? So this is my question, and you already know that. Well, here I'm going to recall it for you guys so that the whole thing must be fresh in your mind. Okay, so length is a measure of distance. Okay, whenever we are going to measure the distance, we are going to use this word length. Length is a quantity with dimension. Dimension means उसकी direction होती है, किस चीज की, distance की. ठीक है? Okay, so I'm going to recall again. Length is a quantity with dimension distance. Okay, and standard metric unit of length is kilometer, meter, and centimeter. In most systems of measurement, a base unit for the length is chosen. So for that sake, we have an international system of unit which is called meter. So basically, meter is the standard unit of base. Which base? Length base. So right now, we are going to use centimeter as well. Whenever we are going to measure the length, and that length will be smaller. Okay, for smaller length, we are going to measure this thing, and for the short form of this centimeter is small c and small m. And the small, this thing is the abbreviation called. And for meter, we are going to use simple small m. And for kilometer, we are going to use small k and small m. Okay, you need to remember it. So for measuring length, you can just check this example out. Here is a ruler. So this is a best example of your daily life. Okay, so here the length of the pencil is going to be measured. So we are going to measure the length of the pencil here. What to do? What you are going to do is आपने पेंसिल लेनी है और उसमें जो रूलर है जिसके ऊपर CM लिखा हुआ है उस साइड की तरफ से आपने रूलर को अपने सामने कर लेना है. 0 पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली 0 उसको आपने बिल्कुल अलाइन करना है, उसके सामने करना है. उसके या तो आप उसकी पेंसिल की बैक को कर लें या उसकी टिप को कर लें. डिपेंड्स अपॉन यू. इसमें कोई खास रूल नहीं है कि आपने पेंसिल की निप को इस तरफ करना है और पेंसिल की जो रेजर वाली साइड होती है उसको इस तरफ करना है. कोई भी साइड आप चूज कर सकते हैं. तो उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट साइड आपने ली और आपने बिल्कुल देख लेना है कि वो एग्जैक्टली 0 के बराबर होनी चाहिए. और जो लेफ्ट साइड है, जो एंडिंग साइड है, उसमें आपने ऑब्जर्व करना है. किस चीज को ऑब्जर्व करना है? अपने रूलर को ऑब्जर्व करना है. इस रूलर के ऊपर आप देखेंगे कि एक, फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 के बीच में अगर आप काउंट करें तो देयर आर 10 स्मॉल लाइन्स. ठीक है, हर लाइन के अंदर 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, सारी लाइनों में आप चेक करें, छोटी लाइन जो है वो कितनी है? 10 है. बिल्कुल इसी तरह से हम अगर इसको काउंट करेंगे तो जितनी स्मॉल लाइंस होंगी वो उसको हम करेंगे पॉइंट में. ठीक है, बट यहाँ पर आप चेक करें इस एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 9 सेंटीमीटर. चेक कर लें आप, 0 से 9 तक का डिस्टेंस है फ्रॉम 1 एंड टू नेक्स्ट एंड. जी जनाब, ये इरेजर है. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन चेक द इरेजर. इसकी मेजरमेंट को भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे. एक एंडिंग पॉइंट को आप 0 पे फिक्स कर दें, सेकेंड एंडिंग पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर लें रूलर पर. इसी तरह से आप इंची टेप से भी कर सकते हैं. इंची टेप भी एक मेजरमेंट का टूल है. So here in this example you can check that the length of the eraser is 2 centimeter. Okay, so here we go. We are going to measure longer object. How? For measuring longer object, we use meter to measure longer object. We use measuring tape or meter rod to measure the length. Okay, in this example you can check over here. Here is the picture of meter rod and measuring tape. And in this example, you can check that there is a board over here. So we are going to measure this board as well. You can check that this this is a blackboard kind of board. So this is 1.5 meter long, and long means length. Okay, and this breadth is from both sides we have. Okay, so this from this side this is 1.5, and from this side this is 1 meter long.
in this example. So right now I told you earlier as well, we are going to use small m to denote meter. Remember that this is very important thing, that 1 meter is equals to 100 centimeter. यानी 1 मीटर के अंदर 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और वो जो छोटी छोटी लाइंस मैंने आपको दिखाई हैं अभी रोलर के ऊपर, जो 10 लाइंस हैं, वो किसको डिनोट करती हैं? मिलीमीटर को। ओके, सो लुक एट द मीटर रॉड, इट इज 1 meter long. Okay, this one. Now the measuring tape, you already know that. The ruler, I have told you. And the length of the board is, I told you that this is 1.5 meter, and the width is 1. So measuring longer objects, we are going to have kilometer as well. This is also a unit of length. We are going to use small k and small m to denote kilometer. Remember that. Very interesting fact. You need to remember it because this is a rule which is not going to be changed anymore. So this is 1 kilometer is equals to 1000 meter. यानी 1 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि ये किलोमीटर है तो इसके अंदर क्या होगा? मीटर होंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे आप अपने घर से स्कूल की तरफ जब मूव करते हैं, तो अगर आपका स्कूल बहुत पास है घर के, तो फिर आप मीटर में मेजर करेंगे। अगर आपका स्कूल दूर है, ज्यादा दूर है, तो आप उसको मेजर करेंगे किलोमीटर में। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी बताने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन असलम्स हाउस एंड हिज स्कूल इज 2 किलोमीटर. This is given in small abbreviation k, small k and small m. So you must know this thing as well. We use 3 basic units of measurements, which is the first one meter for length, the second one kilogram for mass, and the third one liter for capacity, or you can say that volume. Hope you are going to remember these rules and remember the facts over here, that in 1 meter there are 100 centimeter and in 1 kilometer there are 1000 meter. So you are going to observe your daily life example. Do check the distance between the different places, and you are going, whenever you are going to observe well, you are going to observe the length actually. So this is a good measurement in your cellular phones or your mobiles, that there is a navigation app from which you can measure the distance as well as direction. Okay, so you already know that is called Google Maps. Hope you are going to observe and you are going to learn more out of your daily life and your environment. We'll get back to you with more interesting concepts of mathematics. Take good care of yourself. Allah Hafiz.